point divides a segment joining two points in the given ratio. A point divides a line segment joining two points in the given ratio. सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, तो इसका मतलब we have to find a point which divides a line segment joining two points in the given ratio. मतलब कि ये जो पॉइंट है, this point is required. This is the required point जो हमें निकालना होगा. जैसे कि we have a line segment joining two points A x1, y1 and B x2, y2. There is a point C which divides the segment joining AB in the given ratio, say m ratio n. यानी जो point C है वो segment AB को m ratio n में divide कर रहा है. इसका मतलब AC means AC ratio CB is what? M ratio n. Here, a point which divides the segment joining AB in the ratio m is to n is the point C, which is required to us. ये हमें point find out करना है. उस सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू हम एक ऐसा point find out कर सकते हैं. Coordinates of point which divides the segment joining the points A x1, y1 and B x2, y2. In the ratio m ratio n internally. ये अभी जो हम कर रहे हैं वो इंटरनल रेशियो का कर रहे हैं, राइट? Coordinate axis, x axis and the y axis. Suppose this is the segment joining the points A x1, y1 and B x2, y2. Here, if this point is x1, y1 means this is x1 and this is y1. x2 y2. क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है which divide this in the ratio m ratio n. Suppose the point is
C x comma y. That the point which divide AB in the ratio M ratio N be C x comma y. Let the coordinate x comma y divides AB in the given ratio M ratio N. This is M ratio N. Clear? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? Now we draw a line to A parallel to x-axis and through C parallel to x-axis and a line through C parallel to y-axis and through B parallel to y-axis. Here, now we have two right triangles. Triangle BEC and triangle CDA. दो राइट ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं. एक ये वाला एंड एक ये वाला. बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. कैसे? ट्रायंगल ABC is similar to triangle. देखो D के इक्वल कौन सा एंगल है? E. each 90 डिग्री. तो D यहाँ पर सेंटर में, तो यहाँ पर E सेंटर में होगा. एंगल A is equal to एंगल C. corresponding angles. A फर्स्ट पोजीशन पे मींस C फर्स्ट पोजीशन पे होगा. CEB by AA similarity. क्लियर यहाँ तक? Therefore, the sides of triangle ADC and CEB are proportional because when two triangles are similar, their sides are proportional. Therefore, AD upon CE equals to BC upon EB equals to AC upon CB, because when two triangles are similar, their corresponding parts are proportional. Here, अब इनकी वैल्यूज प्लेस करें. AD हमारा किसके इक्वल है? देखो AD किसके इक्वल होगा? अगर ये C कोऑर्डिनेट हमारा x, y मींस दिस इज x एंड दिस इज y. तो जो AD है वो किसके इक्वल है? इतना पार्ट है, यानी कि x माइनस x1 इज इतना. आ गया समझ में? ये है हमारा टोटल x. x में से हमने x1 पार्ट रिमूव कर दिया तो कितना बचा? x माइनस x1. सो AD इज x माइनस x1 अपॉन CE. CE किसके इक्वल होगा? CE इक्वल्स टू दिस मच, x2 माइनस x. क्लियर? x2 माइनस x equals to DC. DC will be y minus y1. Clear?
कितने में से y में से y1 पार्ट माइनस कर दें, दिस इज y माइनस y1 अपॉन EB is y2 minus y1, sorry, y2 minus y equals to AC. AC is m, CB is n, m ratio n, because इसकी तो हमें रेशियो गिवन है. AC ratio CB is m ratio n. क्लियर? तीनों पार्ट्स प्रोपोर्शनल है, दो को इंडिविजुअली इक्वल ले ले. दिस इंप्लाइज x minus x1 upon x2 minus x equals to m upon n. हमें क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू निकालनी है ना. यहाँ से x हम सेपरेट कर सकते हैं. x को सब्जेक्ट बना दे. कैसे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? n into x minus x1 equals to m into x2 minus x. Clear? Now we make x as a subject. उसके लिए मल्टीप्लाई कर दें. nx minus nx1 equals to mx2 minus mx. x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले लेते हैं. nx प्लस mx इक्वल्स टू, ये इस साइड आ जाएगा, mx2 प्लस nx1. here x is common, m plus n, mx2 plus nx1. therefore x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. x की वैल्यू आ गई. सिमिलरली y minus y1 upon y2 minus y equals to m ratio n. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ny minus ny1 equal to my2 minus my. y वाली टर्म्स को लेफ्ट पर ले आएंगे सब्जेक्ट बनाने के लिए. ny plus my equals to my2 plus ny1. y कॉमन, m plus n इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. my2 plus ny1 अपॉन m plus n. क्लियर? फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ये x कोऑर्डिनेट इससे फाइंड आउट कर लेंगे एंड y कोऑर्डिनेट इससे. ए बी ए x1 y1 b x2 y2. A point C divides AB in the ratio m ratio n. x y हमें फाइंड आउट करना है. ठीक, x की वैल्यू क्या होगी? देखो कैसे चलना है, ये बनाना है, क्रॉस करना है ऐसे. लेफ्ट वाले को राइट से, राइट को लेफ्ट से, ऐसे. मतलब जब x का कोऑर्डिनेट निकाले तो x की इन्वॉल्वमेंट होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. और y किसके इक्वल होगा?
m by 2 plus n by 1 upon m plus n. Here, for example, a minus 3 comma 2, b 5 comma 4. We have to find a point C which divide AB internally in the ratio 2:3. X equals to mx2, that is 2 into 5, plus nx1 3 into minus 3 upon m plus n 2 plus 3. So x is equal to 2 5s are 10, 3 into minus 3 will be minus 9 upon 5. X equals to 1 upon 5, and y equals to m by 2, that is 2 into 4 plus n by 1 3 into 2 upon m plus n. Y equals to 2 4s are 8 plus 3 2s are 6 upon 5. Y equals to 14 upon 5. Therefore, the coordinates of the point C 1 by 5 comma 14 by 5 is the point which divide AB in the ratio 2:3. Midpoint formula. Midpoint formula. The coordinates of the midpoint of the segment joining A x1 comma y1 and B x2 comma y2. Let C be the midpoint of the segment AB. C x comma y. If C is midpoint of AB, means C divides AB in the ratio 1:1. अगर midpoint है तो 1:1 हो जाएगा. Ratio is 1:1. Now x is same formula हम use करें, section formula 1 into x2 plus 1 into x1 upon 1 plus 1. So x equals to x1 plus x2 divided by 2, and y equals to 1 into y2 plus 1 into y1 upon 1 plus 1. So y equals to y1 plus y2 upon 2. Therefore, the coordinates of the midpoint are x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. Means दोनों coordinates का sum divided by 2. For example, A 1 comma 5, B 3 comma minus 3. Let C be the midpoint. Now C x comma y is x equals to, midpoint is sum of the coordinates divided by 2. So x1 plus x2 divided by 2. X equal to 4 upon 2. X equal to 2. And y equals to 5 plus minus 3 y1 plus y2 upon 2. Y equals to 1. Therefore, the coordinate is 2 comma 1 is the midpoint. In what ratio does the point minus 4 comma 6 divides the segment joining the points minus 6 comma 10
and -3, 8. In what ratio does the point -4, 6 divides the line segment joining the points -6, 10 and 3, -8? इसको 3, -8 ले लें. 3, -8 रेशियो फाइंड आउट कर रही है. सपोज C divides AB in the ratio K:1. रेशियो जब भी लेट करनी हो ना K:1 अज्यूम करके चलना. सपोज C divides AB in the ratio K:1. क्लियर? अब देखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला let this is x, y. X is k into 3 इजी रहेगा करना. दो वेरिएबल लेंगे m रेशियो n तो उसमें m अपॉन n निकालना पड़ेगा हमें. k:1 में सिर्फ k निकालना पड़ेगा. वही तो निकाल रहे हैं हम. k:1 जो हमारी m रेशियो n है ना, इसको m अपॉन n रेशियो 1 लिख सकते हैं. तो हमने m अपॉन n को k लेट कर लिया. इससे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा. Using section formula, x equals to k into 3 plus 1 into -6 upon k plus 1. ये जो k की वैल्यू है वो हमारी x से निकल जाएगी. y वाला करने की जरूरत ही नहीं है. Here x is -4 equals to 3k -6 upon k plus 1. Cross multiplication -4k -4 equals to 3k -6 -4k -3k equals to -6 plus 4 -7k equals to -2, k equals to 2/7. k का वैल्यू आ गया. हमने रेशियो क्या अज्यूम करी थी? k:1. रेशियो इज k:1. so k is 2/7. रेशियो 1. रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दें. 2:7. So this is answer. The point C divides AB in the ratio 2:7. Clear?